I welcome you all to this mathematics class. I'm Ms. Vandana Gupta, Assistant Professor of Mathematics. We are in the last unit, Unit 5, Decision Theory of Section 2, Statistics. In this, we have already completed the Maximax, Maximin, and Laplace criterion under decision making under uncertainty and decision making under risk EMV criterion. Today, we are going to see what is the regret table, how to prepare it from the payoff table, what is the meaning of regret. Okay, so let us begin. Regret or opportunity loss. It is the loss incurred due to failure of the decision maker to select the best possible course of action with maximum payoff. See, we all know that what is the best course of action where you are getting the maximum profit, correct? जहां आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वही तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा ना, वही बेस्ट डिसीजन होगा. तो अगर आपने वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं सेलेक्ट किया जहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ओके, तो यू आर गोइंग टू रिग्रेट, मतलब आपको पछतावा होगा कि आपने वो वाला क्यों नहीं चुना और आपको लॉस होगा. ओके, सो दैट लॉस इज कॉल्ड एज रिग्रेट. So what is that regret or opportunity loss? It is the loss incurred due to failure of the decision maker to select the best possible course of action with maximum payoff. मतलब it is the loss incurred to the decision maker for not selecting the best course of action. Okay, that is called the regret, or it is also called as opportunity loss. When I will solve the problem, you will understand more. I mean, the things will become more clear to you. So basically, regret or opportunity loss is the loss incurred due to not selecting the best possible course of action with maximum payoff. Now, mathematically, how are you going to calculate these regret values? So mathematically, the regret or opportunity loss for each state of nature is calculated by subtracting each payoff of that state of nature from the maximum payoff. मतलब regret हम कैसे निकालेंगे? By subtracting the value or the subtracting the payoff from the maximum payoff. मैक्सिमम पे ऑफ क्या है? जहां आपको बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, जहां आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो उस मैक्सिमम प्रॉफिट में से जो भी वो फिगर है, बाकी के वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो द लॉस यू विल गेट, ओके, फॉर नॉट selecting the best possible course of action. So how do you calculate the regret values? We calculate the regret values for each state of nature by subtracting each payoff from the maximum payoff. Okay, and the table which represents such opportunity losses is called as regret table. So regret table is uh, prepared from the payoff table only, from the profit table. Profit table मतलब payoff table. तो ऐसा होता है regret table. The table showing the courses of action, states of nature, and these figures will denote the regret values, regret or opportunity loss values. पे ऑफ टेबल में ये जो फिगर होते थे वो प्रॉफिट डिनोट करते थे, प्रॉफिट मतलब पे ऑफ. लेकिन रिग्रेट टेबल में यहाँ ये जो फिगर्स है corresponding to course of action and state of nature, these figures will denote what? Regret or opportunity loss values. So these loss values we are going to calculate from the payoff table only, okay, by subtracting each value from the maximum, okay, maximum payoff. So regret table looks like this, where these figures are regret or opportunity loss values. Now let us see how to prepare the regret table. Okay, so let me straight away take the problem. For the following payoff matrix, determine the best decision by using minimax regret criterion. Now, what is this minimax regret criterion? I'm going to explain you later on. First of all, you understand that whenever we have to use minimax regret criterion, we have to convert the payoff table into the regret table. मतलब ये जो profit values दिए हैं, इनको हमें loss में convert करना है. We have to convert this table into a loss table, which is called as a regret table. How to do that? So I'm going to explain you here.
All of you concentrate here. This is the table given to me is what? It is a payoff table. This table which is given to me is a payoff table. इसी टेबल से मुझे क्या बनाना है? Loss table, that is regret table. I am making it side by side so that you can understand it. So regret table में क्या होता है? यही A1 A2 A3 इधर होते हैं कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ नेचर, लेकिन ये जो फिगर्स होते हैं वो प्रॉफिट की जगह लॉस होते हैं. तो लेट अस सी हाउ वी डू दैट. हाँ, तो ये A1 A2 A3 वैसे ही रहेंगे, S1 S2 S3 भी वैसे ही रहेगा. तो ये A1 A2 A3 और S1 S2 S3 ये वैसे ही रहेंगे. ठीक है. What I'm going to write here, they will be the loss values. Let us see how to prepare. So how do you prepare the regret? Let us see what I have written here. The regret, mathematically, the regret for each state of nature is calculated by subtracting each payoff from the maximum payoff. So what we are going to do? This state of nature S1. What are the profit values? 10, 12, 25. What is the maximum value here? Maximum profit कहाँ आ रहा है? 25. So you have to subtract each of these values from 25. So 25 minus 10. What you will get? 25 minus 10 कितना आएगा? Be 15. So you will write here 15. Understood? Similarly, 25 is the maximum figure. You have to subtract these values from maximum. So 25 minus 12. 25 minus 12. What will be that? 30. तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 30. Next one, 25 minus 25. ये maximum भी वही है, figure भी वही है, तो 25 minus 25 will be 0. So this first column of the loss table we have prepared. Okay. Let us see the second column. In the second column, where you are getting the maximum value, it is 24. इसका मतलब हर एक वैल्यू को हमें इस मैक्सिमम से सब्ट्रैक्ट करना है. तो 24 minus 18 कितना आएगा? 24 minus 18. How much? 6. So here we will write 6. 24 minus 24. 0. 24 minus 10. How much? 14. Correct? Similarly, so you will have prepared the second column of the regret table. Regret table. Look at the third column. What is the maximum figure here? 30. So you have to subtract each of these values from 30. So 30 minus 25 will give you 5. 30 minus 30 will give you 0. And 30 minus 20 will give you 10. Okay. So this table which we have got now, it is called as regret table. Understood? From the payoff table, we have to prepare the regret table first if we are using this criterion, Minimax regret criterion. What is a regret table? Regret table indicates the loss values or the regret values. How will you get the regret values? By subtracting for each state of nature, by subtracting the payoff from the maximum payoff. So look at each state of nature. मतलब column wise आपको देखना है because my state of nature are written column wise. So in this first column, look at what is the maximum entry. It is 25. So each of these values you have to subtract from 25. So 25 minus 10 gives you 15. 25 minus 12 gives you 30. And 25 minus 25 gives you 0. Okay. Similarly, for this, maximum value is 24. So each of these values will be subtracted from maximum, that is 24. So 24 minus 18 will give you 6. 24 minus 24 will give you 0. And 24 minus 10 will give you 40. So this second column. Third one, look at the third state of nature where you are getting the maximum value 30. So each of these values have to be subtracted from 30. 30 minus 25 will give you 5. 30 minus 30 will give you 0. And 30 minus 20 will give you 10. So this table which we have now constructed is called as
regret table. These figures are the loss values or the regret values. Okay, so ये मैंने already prepare किया है and I have shown here the regret or opportunity loss table. 1565, this is what we got. 1565 and 1300, second row 1300, and what is the third row? 0, 14 and 10. 0, 14, and if by mistake 5 is written, it is 10. 0, 14, so make a correction here. 0, 14 and 10. So this is the regret table we have prepared. Okay, now what is this minimax criterion? ये criterion क्या है? So what we have to do in minimax criterion, you have to first convert the table into regret table, that we have done. Now what we are going to do, we are going to take the maximum minimax regret, na? Minimax regret. Okay, so we are going to take the maximum regret value, maximum. So prepare a column for maximum. From each course of action, select the maximum regret. So what is the maximum value out of 15, 6 and 5? It is 15. So for A1, maximum regret is 15. I have written here 15. For the second course of action, where I am getting the maximum figure, 13, 0 and 0. So which is the maximum? 13. Maximum matlab sabse bada. So 13. For A3, 0, 14 and 10. Maximum regret is 14. So out of these maximum, we have to select the minimum. Why minimum? Because these are the loss values. तो loss, जहां loss सबसे कम होगा, that is the best decision, correct? So we are going to select the minimum. So out of these maximum regret values, select the minimum. Out of 15, 13 and 14, the minimum of 15, 13 and 14 is 13. ये देखो मैंने indicate किया है यहाँ और इसको highlight भी किया है. And it is for what? It is for A2. So A2 is the best decision. Okay. So देखो यहाँ मैंने लिखा है, therefore by minimax regret criterion, A2 is the best decision. And what is the minimum regret? With regret of 30. तो ये बात आपको याद रखना है कि जब आप रिग्रेट टेबल को यूज कर रहे हैं तो ये दैट टेबल इज लॉस टेबल. सो एट द एंड यू हैव टू ऑलवेज सेलेक्ट द मिनिमम लॉस, क्योंकि वही डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन जहां पर हमें लॉस मिनिमम होता है. ओके, लेकिन अगर ये पे ऑफ टेबल होता है तो हम कौन कौन से क्राइटेरियन यूज करते थे? इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको पे ऑफ टेबल है, पे ऑफ टेबल में क्या होता है, जो फिगर्स दिए रहते हैं वो प्रॉफिट फिगर्स होते हैं. तो आपने कौन कौन से क्राइटेरियंस यूज किए थे? एक था मैक्सीमैक्स, एक था मैक्सिमिन एंड दूसरा था लैपलेस. हर जगह पर हम मैक्स, पहले हम मैक्सिमम निकालते थे, उसका भी मैक्सिमम, दैट वाज शोइंग एन ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर. यू रिमेम्बर? फिर यहाँ भी हम पहले मिनिमम निकालते थे, बाद में मैक्सिमम, दैट वाज शोइंग द पेसिमिस्टिक अप्रोच ऑफ द, मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. और यहाँ बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, तो हमेशा हम बेस्ट ही ले रहे हैं क्योंकि दिस इज अ प्रॉफिट टेबल. लैपलेस में हम एवरेज निकालते थे और मैक्सिमम ऑफ द एवरेज लेते थे, मैक्सिमम ऑफ द एवरेज वैल्यूज. तो वहां भी हम मैक्सिमम ही लेते थे, यहाँ भी क्योंकि वो प्रॉफिट टेबल था. लेकिन रिग्रेट में हम क्या लेंगे? लास्ट में मिनिमम लेंगे, बिकॉज इट इज ए लॉस टेबल. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Let us see the next problem. For the following payoff table, find the best decision by minimax regret criterion. Same criterion use करना है. तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? ये जो पे ऑफ टेबल है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको रिग्रेट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. This is the payoff table. For the following payoff table, this is the payoff table. We have to convert this table into which table? Regret table. Regret table मतलब loss table. So what? How are you going to convert? ये A1, A2, A3 वैसा ही रहेगा और S1, S2, S3, S4 यहाँ पर 4 है state of nature. They will also be like that. लेकिन यहाँ जो मैं values लिखने वाली हूँ, they will be the loss values. Okay? How are we going to prepare the regret table? जैसे हमने पहले वाले प्रॉब्लम में किया था. Look at the first state of nature. इस कॉलम में सबसे बड़ा फिगर कहाँ है? मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? 57. ये मैक्सिमम है.
तो हर एक वैल्यू हमको 57 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 57 minus 57, this will give you 0. Then 57 minus 24. 57 minus 24 कितना होगा? 33. Correct? So we will write here 33. 57 minus 57 minus 24 is 33. 57 minus 12 is how much? 45. So this will be 45. Okay. Similarly, so first column is prepared. Second column, what is the maximum value here? 34. So each value has to be subtracted from 34. 34 minus 24 will be 10. 34 minus 28 will be 6. And 34 minus 34 is 0. Similarly, in this column, maximum figure is 37. So each of this value you have to subtract from 37. 37 minus 37 will be 0. 37 minus 32 will be 5. And 37 minus 26 will be 11. 11, na? 11. Okay. Similarly, for the last column, the maximum figure is 50. So each of these value you have to subtract from 50. So 50 minus 50 is 0. 50 minus 13 is how much? 37. And for 50 minus 44 is 6. So this table is the regret table. I have already prepared it. Let us see what is that. First row is 0, 10, 0, 0. Do we got this? Yes, 0, 10, 0, 0. Second one, 33, 6, 5, 37. 33, 6, 5, 37. Correct. And last one, 45, 0, 11, 6. 45, 0, 11, 6. So this is, I have already prepared, but I have shown you here how to prepare that. Okay. Now, once the regret table is obtained, to find out by minimax criterion, what you are going to do? Minimax criterion. सबसे पहले आपको हर एक कॉलम का मैक्सिमम लेना पड़ा, हर एक रो का, हर एक कोर्स ऑफ एक्शन के लिए you will find out the maximum regret. Which is the maximum figure here? G10. And here 37, here 45. Out of these maximum, select the minimum because it's ultimately the loss. So minimum. So out of 10, 37 and 45, minimum is 10 and it is for A1. So the best course of action is A1. So A1 is the best decision with regret of 10. Okay. Now this is mini-max criterion. So what is the decision maker is doing? He is taking the maximum loss. इसका मतलब ये maximum loss लेकर फिर उसका minimum लेता है. So this minimax criterion is also showing the pessimistic approach of the decision maker. मतलब he is selecting the best out of waste. Minimum loss. Minimum loss मतलब best. Maximum regret मतलब waste. Maximum loss मतलब waste ही है ना. तो it is pessimistic behavior. एक और होता है criteria mini-min, but that is not in your syllabus. Okay. So this is how prepare the regret table, find out the maximum from each row, and then select the minimum. That is minimax criterion. Okay. So this is what criterion. This criterion is used when probabilities are not given. मतलब decision making under uncertainty. This is what I have written here. See here. Decision making under uncertainty. पे ऑफ टेबल के लिए हमने तीन क्राइटेरियन यूज किए थे, मैक्सीमैक्स, मैक्सिमिन एंड लैपलेस. लेकिन रिग्रेट टेबल के लिए हमें कौन सा क्राइटेरियन है? मिनिमैक्स क्राइटेरियन, वन विच वी आई हैव ऑलरेडी टेकन. अभी अभी जो आपको मैंने एग्जांपल से बताया वही चीज मैंने यहाँ लिखा है. In this case, the decision is to choose that course of action which minimizes the maximum regret. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट कन्वर्ट द पे ऑफ टेबल इनटू रिग्रेट टेबल. दैट इज व्हाट वी डिड, है ना. सबसे पहले हमने रिग्रेट टेबल बनाई. कैसे बनाई? हाउ टू प्रिपेयर रिग्रेट टेबल? कैलकुलेट रिग्रेट वैल्यूज फॉर ईच स्टेट ऑफ नेचर बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच पे ऑफ फ्रॉम द मैक्सिमम पे ऑफ. वैसे ही बनाया था हमने, बाय subtracting each value
by subtracting the maximum uh, from the maximum value, each of these value. That is how we have prepared the. Yes, hello. So how we have prepared? Wait a minute, somebody is calling me. Hello, hello. So that is what we did. We first prepared the regret table by subtracting each value from the maximum. Okay. उसके बाद हमने क्या किया? Choose the maximum regret. Correct ना? फिर हमने क्या किया था? We have selected the maximum regret for each course of action. And then the third step, now select the course of action with minimum value from the maximum regret. Minimum value from the maximum regret. Okay. Now let us see decision making under risk. In risk, what happened? The decision maker has the knowledge of the probabilities of occurrence of each state of nature. यानी यहाँ आपको probabilities दे रहेंगे. Okay? Under uncertainty में देखो probabilities नहीं दिया है, लेकिन decision making under risk में आपको ऐसे probability दिया रहेगा. तो अगर ऐसा है तो you have to use which criterion? EOL. जैसे EMV यूज किया था पे ऑफ टेबल के लिए, वैसे EOL निकालना है. बट इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस. तो व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द पे ऑफ टेबल इनटू रिग्रेट टेबल. एंड देन देखो द स्टेप EOL क्राइटेरियन. व्हाट इज द EOL क्राइटेरियन? EOL criterion, the steps are as follows. First, calculate the regret values for each state of nature by subtracting the each payoff value from the maximum. That means convert the payoff table into regret table. That is the first step. Second is what? Calculate EOL, expected opportunity loss. जैसे हमने EMV निकाला था, वैसे ही अब हम निकालेंगे expected opportunity loss, मतलब EOL. How? By taking the sum of the products of regret values and their respective probabilities. Same method है. Product of probability and regret values and then add them. Find out EOL for each course of action. And then third step, the best course of action will be the one with minimum EOL. Why minimum? EMV में maximum लेते थे, क्योंकि EMV was calculated from profit table. तो profit हमेशा हम maximum लेते हैं. EOL is expected opportunity loss. ये regret से बनता है, loss table से calculate होता है EOL. So the best will be where you are having minimum loss. So the best course of action is the one with minimum EOL. Okay, let us see the problem. See here, for the following payoff table, suggest the best decision by using EOL criterion. ये payoff table है, आपको EOL क्राइटेरियन यूज करना है. तो इस टेबल को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? लॉस टेबल में, रिग्रेट टेबल बनाना पड़ेगा. दैट्स द वेरी फर्स्ट स्टेप. ओके, सो सी हियर, ये पे ऑफ टेबल जो आपको दिया है 14, 16, 10, 12, 15, 16, सेम टेबल, फिर पे ऑफ टेबल. इस टेबल से मैंने रिग्रेट टेबल बनाया. तो आई हैव केप्ट बोथ द टेबल साइड बाय साइड. लुक एट हियर, फिर पे ऑफ टेबल. अब मैं रिग्रेट टेबल बना रही हूँ, ये आपको दिया है ऑलरेडी, ये देखो इट्स द सेम टेबल. ओके, हाउ विल यू मेक? A1 A2 A3 ये सेम रहेगा, S1 S2 S3 ये भी, और प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगा. केवल ये जो फिगर्स है ये प्रॉफिट फिगर से लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. हाउ? सेम वे. पहले वाले कॉलम में मैक्सिमम एंट्री क्या है? 20 है. So each of the figure you have to subtract from 20. So 20 minus 14, 6. 20 minus 12, 8. And 20 minus 20, 0. Same way. Similarly, in the second column, S2, where you are getting the maximum value, it is 18. So subtract each of these value from 18. Okay. So 18 minus 16, that will give you 2. 18 minus 15 will give you 3. 18 minus 18 will give you 0. Similarly, third column, where you are getting the maximum figure,
maximum profit is 16. Okay, here 16. So each of these values you have to subtract from 16, correct? Each of these values you have to subtract from 16. So 16 minus 10, 6. 16 minus 16, 0. And 16 minus 14, 12, 2. So you have prepared the regret table. उसके बाद क्या करना है? EOL निकालना है. EOL ऑफ A1 कैसे निकालेंगे? जैसे EMV निकालते थे सिमिलरली वैसे ही EOL ऑफ A1 निकालना है. तो क्या करेंगे? 6 into these are the regret values, multiply them with probability and then add 6 into 0.4. See here, 6 into 0.4 plus 2 into 0.3, 2 into 0.3 plus 6 into 0.3, 6 into 0.4, 2 into 0.3, 6 into 0.3. You will get 4.8. This is what is written here. Similarly, EOL of A2 निकालना है. If you want to find out EOL of A2, what are you going to do? You are going to take A2 row. Okay, ये वाला row. इसमें regret values are 8, 3 and 0. Multiply 8 with its probability 0.4. Look at here. Plus 3 into 0.3. 3 into 0.3. Plus 0 into 0.3. Then add, you'll get 4.1. Here I have written 4.1. Similarly for EOL of A3. 0 into 0.4 plus 0 into 0.3 plus 2 into 0.3. You will get 0.6. Expected opportunity loss. तीनों के लिए निकाला. Best one will be where EOL is minimum, not maximum, minimum. सबसे कम यहाँ पर आ रहा है 0.6 minimum. So it is for A3. So the best, since minimum EOL is 0.6 for action A3, so the best decision is to choose A3. Okay. तो रिग्रेट जब EOL निकालना है तो पे ऑफ टेबल को रिग्रेट टेबल में कन्वर्ट करना होगा. जैसे EMV निकालते थे वैसे EOL निकालना है. सेम वे. देन सेलेक्ट द बेस्ट डिसीजन जहां पर आपको सबसे कम EOL है. Look at the second problem. Again, similar type of problem. For the following payoff table, suggest the best decision using EOL criterion. ये आपको payoff table दिया है. सबसे पहले इस टेबल को आपको रिग्रेट टेबल में कन्वर्ट करना है. ये देखो, ये payoff टेबल है. I have converted into regret table. How? ये सब सेम रहेगा. A1, A2, A3, S1, S2, S3 and probabilities. Look at the first column. Maximum entry is 17. So 17 में से हर एक फिगर को सब्ट्रैक्ट करना है. 17 minus 15, 2. 17 minus 13, 4. And 17 minus 17, 0. S2 इस वाले में सबसे मैक्सिमम क्या है? यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 17 था. ओके, इधर 17 था, इधर 16 है. तो 16 minus 14, 2. 16 minus 15, 1. 16 minus 16, 0. और यहाँ पर 25. 25 minus 10, 15. 25 minus 12, 13. 25 minus 25, 0. तो इस तरह से रिग्रेट टेबल बनाते हैं. Then you calculate EOL for each course of action. So EOL of A1, 2 into 0.5. Here it is. Plus 2 into 0.4. Plus 15 into 0.1. 3.3. Similarly, EOL of A2, 4 into 0.5 plus 2, 1 into 0.5 plus 13 into 0.1. Answer is 3.7. EOL of A3, ये सारे फिगर 0 है. तो 0 into 0.5 plus 0 into 0.4 plus 0 ही आएगा. तो EOL निकाल लिया तीनों के लिए. ठीक है. अब मिनिमम EOL कहाँ है? दिस इज मिनिमम. 0 इज मिनिमम ना. मिनिमम सबसे छोटा 3.3, 3.7, 0 सबसे छोटा 0. It is for A3. So the minimum EOL is 0 for A3. So the best course of action is A3. Okay. So both these problems I have taken. Now there is one small topic remaining. Quickly I will finish that. Decision tree. What is a decision tree? A decision tree is a graphical representation of decision making problem. यानी जो प्रॉब्लम आपको ऐसे टेबल के रूप में देते थे, इसको आपको पिक्चर के रूप में बनाना है. That picture looks like a tree, and that is why it is called as decision tree. See here how it starts. It starts with a decision node which is represented by a square. देखो अभी मैं आपको बताती हूँ. ये एक टेबल के रूप में आपको प्रॉब्लम दिया है, इसका आपको डिसीजन ट्री बनाना है. तो लुक एट हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट. तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ ए स्क्वायर. इस सिंबल इसको बोलते हैं स्क्वायर. कितने कोर्स ऑफ एक्शन है? 2, A1 एंड A2. तो इधर से आपको 2 ब्रांचेस जाएगा. ब्रांच होते हैं जैसे ट्री में, बिल्कुल वैसे ही A1 एंड A2. And this will end into circle. This circle is called as state of nature node. फिर इसमें कितने स्टेट ऑफ नेचर है? 3, S1, S2, S3. तो यहां से 3 ब्रांचेस जाएगा. S1, S2 and S3.
यहाँ से भी 3, S1, S2 and S3. This type of representation is called as a diffusion tree. It looks like a tree. ये उसका रूट है, ये मेन ब्रांचेस है 2 और ये 3 सब ब्रांचेस. Okay, that is what is written here. It starts with a decision node which is represented by a square. तो ये इसको बोलते हैं decision node. Okay, फिर उसके बाद क्या लिखा है? The different courses of action originate as branches from the decision node. तो ये देखो कितने कोर्स ऑफ एक्शन है? 2, A1 and A2. So they will emerge as branches from this node. उसके बाद and at the end of each of these branches there are state of nature nodes which are represented by circle. मतलब एंड में ये जो ब्रांचेस है A1 and A2 ये कहां पर टर्मिनेट हो गए? सर्कल में. These are called as state of nature node. The state of nature node is represented by circle and this course of action it is represented by diffusion node. It is called decision node and it is represented by square. उसके बाद क्या होता है? The state of nature emerge as sub branches from these nodes. तो यहां से 3 state of nature है तो 3 सब ब्रांचेस. यहां से भी A2 के लिए भी 3, तो 3 सब ब्रांचेस. ओके, then the probabilities associated with the states of nature and the payoffs are shown on these branches. फिर इस branches के and this way of representing a decision problem is called a decision tree. Okay, so this ये problem जो table के रूप में था, I have converted it into the decision tree. Look at this. यहाँ मैंने अच्छी तरह से ड्रॉ किया है. This is rectangle decision node. This is for my reference. I have written here A. Even if you don't write, it is fine. यहाँ से कितने ब्रांचेस गए? 2, A1 and A2, because there are 2 courses of action. They will emerge into circle. Circle number 1, circle number 2. अभी A1 में कितने स्टेट ऑफ नेचर है? 3, S1, S2, S3. So I have 3 सब ब्रांचेस, S1, S2, S3. यहाँ पर भी S1, S2, S3. ओके, इन सब ब्रांचेस के ऊपर हमको क्या लिखना है? उनकी प्रोबेबिलिटी. S1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2, 0.3, 0.5. So I have written S1 के इधर 0.2, S2 के इधर 0.3, S3 के इधर 0.5. Similarly here 0.2, 0.3, 0.5. What are these figures? 34, 20, 18. These are these values, payoff values. 34, 20, 18. And for S2, 14, 16, 12. 14, 16, 12. So this is the diagram which I have got. It is called as diffusion tree. Okay. So any decision making problem given in the form of a table can be drawn as a diagram which looks like a tree. It is called as a decision tree. Okay, so here I have shown you the same thing is this. Here I have written the probabilities and the payoff values also. Okay, now here in this problem you have to draw a diffusion tree that we have done and suggest the best diffusion. ये भी पूछा है. तो suggest, how will you suggest the best diffusion, A1 या A2? Find out EMV. EMV of A1. जैसे EMV कैसे निकालते हैं हम? 34 into 0.2 plus 20 into 0.3 plus 18 into 0.5. So EMV of A1 is 34 into 0.2 plus 20 into 0.3 plus 18 into 0.5. So you can see here. These figures are already here. So 34 into 0.2, 34 into 0.2 plus 20 into 0.3, 20 into 0.3 plus 18 into 0.5. कितना आया? 21.8. So EMV of A1 is 21.8. And EMV of A2, our same method. 14 into 0.2, 16 into 0.3 plus 12 into 0.5. When you do, it is 13.6. Then see where you are getting maximum EMV is 21.8, which is for A1. So best course of action is A1. Since maximum EMV is 21.8, which is for action A1, so the best diffusion is A1. So ऐसा आपको diffusion tree बनाना आना चाहिए. तो एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकते हैं, एक आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सा डिफ्यूजन ट्री है इसका. तो बहुत इजी है बनाना. स्क्वायर से स्टार्ट करना है, जितने कोर्स ऑफ एक्शन है उतने ब्रांचेस, वो सर्कल में सर्कल में एंड होंगे. उसके बाद कितने स्टेट ऑफ नेचर है उतने सब ब्रांचेस, और सब ब्रांचेस के ऊपर क्या लिखना है आपको? उनकी प्रोबेबिलिटी और द वैल्यूज. दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर, प्रोबेबिलिटीज एंड द पे ऑफ वैल्यूज. ओके, so this completes our chapter of decision theory. Next time
a small topic is remaining, that is linear programming problem from mathematics, that we will do in the next lecture. So if you have any doubt, you can write in the chat box. So thank you.